जनाब चेयरमैन, आपकी इजाजत से मैं कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जनाब गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड कर लेना भाई मीडिया वाले जरा। ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला दो, हमारे बस की बात। This clip was from State Bank of Pakistan Governor Jameel Ahmed's meeting with members of the Karachi Chamber of Commerce and Industry on January 18th. As per a Dawn report, the governor was visibly embarrassed when a KCCI representative handed him a giant key in a velvet box as a visual demonstration of the closure of Pakistan's industry. Needless to say, the business community spared little mercy for Jameel Ahmed for letting 5,700 containers laden with food, medicine, and industrial raw materials waste away at ports for months on end. Banks have been refusing to open letters of credit for a majority of imports under explicit directives of the central bank, with Pakistan's foreign exchange reserves falling dangerously low. Import restrictions have been imposed to save dollar outflow. As the country's economy is in serious trouble, with the government struggling to arrange dollars to pay back foreign debts. But with these import restrictions in place, Pakistan's current account deficit contracted to $3.3 billion in the first half of the current fiscal year. Central bank's data shows that exports during the first half of the current fiscal year declined to $14.2 billion from $15.24 billion in the same period of last year, while the imports substantially declined to $29.5 billion compared to $36.09 billion last year. The government has decided not to, they cannot control the import. So they are now doing an administrative job. Administrative job means the LC is opened, document is open there, but the State Bank of Pakistan is asking the banks that don't honor it, keep it pending with you. So that is why the LCs are not being opened. There is no law at the moment that this LC will not be open or that LC will not be open. There is no law as such. But the State Bank of Pakistan in the morning gets up, then they call all 40 banks, how much is your inflow of cash, how much is your outflow of cash. And they say to them, don't overspend, so whatever you receive, LC to that extent open, not more than that. So they are saying that please balance the inflow and outflow. That is why the dollar is at the same value and the official rate. Now, to put it simply, a letter of credit, or LC as it is popularly known, is a credit instrument issued from a bank in the form of a letter guaranteeing that the seller will receive payment from the buyer on time. In case the buyer or importer is unable to make the payment, the bank will cover full or remaining amount of purchase. This protects the seller from being cheated. So, in order to obtain an LC, the importer needs to satisfy the bank that they have enough resources and capital to make payment for the purchase. If an importer doesn't get the LC, they can't import. In short, delaying LC means deferring imports to stop dollar outflow. There's a catch though. Since Pakistan is an import-oriented economy, the industries rely on imports for services and goods to be manufactured locally, which means the delay in opening LC is a sore subject for traders and the business community. I mean, it is difficult times for the importers right now because the LCs are not opening up, and to tell you the truth, the situation is getting worse and worse day by day because there are importing those things which are essential as the raw products for the medical supplies, for the food security, for feed of chicken. So these kind of things, if they are not allowed to be imported, then the whole industry will fail. In a recent episode of DawnNews Zara Hatke, a senior journalist, Wusatullah Khan, quoted a news report that said that many hospitals had put transplant surgeries on hold due to shortage of ATF injection, which helps in prevention of rejection of organs.
अब तक तो डॉलर की कामयाबी सिर्फ मईशत को खा रही थी, लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि अब वो इंसानी जिस्म को भी आहिस्ता आहिस्ता निगल रही है। ख़बर दी है द न्यूज़ में, जो अखबार है उसमें एक ख़बर छपी कि एक दवा है ATG। वो दवा काम आती है कि जब किसी भी इंसानी उसका ट्रांसप्लांट होता है तो चूँकि वो फॉरेन बॉडी होती है, लिहाजा जिस्म उसको रिजेक्ट ना कर दे, तो उसके लिए वो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है और हर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल होता है, भले वो गुर्दे का हो, जिगर का हो, दिल का हो, किसी भी चीज़ का हो, हत्ता कि बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। अब ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट दवा है, ये ज़ाहिर है बाहर से आ रही है और डॉलर नहीं है और LCओं का चक्कर है, और LC हो भी जाए तो फिर कस्टम्स और क्लियरेंस वगैरह। क़िस्सा मुख्तसर, जो मरीज़ है उस पे सारा नज़ला अब गिरना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि ट्रांसप्लांट के सारे ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में इन जर्नल जो होते थे रूटीन में वो रोक दिए गए हैं, सिवाय इंतहाई एमरजेंसी के जो मरीज़ हैं सिर्फ उनका ऑपरेशन हो रहा है। हत्ता कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखय्यर इदारा है ट्रांसप्लांट करने का, गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जहाँ फ्री ऑफ कास्ट होता है हर तरह का ट्रांसप्लांट, उन्होंने भी हाथ उठा लिए हैं कि भाई साहब ATG का इंजेक्शन तो है नहीं, तो अब हम क्या करें। तो इसकी वजह से अच्छा, ये सिर्फ मसला ये नहीं है, कैंसर की अद्वियात वो भी ज़ाहिर है बाहर से आती हैं और डॉलर की वजह से उनमें भी शदीद रुकावट है। बहुत सारे तिब्बी आलात, सियालकोट वाले तो थोड़े बहुत बना लेते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव किस्म के या पेचीदा किस्म के तिब्बी आलात हैं वो ज़ाहिर है वो भी बाहर से आते हैं। डॉलर नहीं है तो वो भी नहीं आ रहा है, ये LC नहीं खुल रही तो वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो ATG इंजेक्शन है ये जर्मनी से आता है और इसको मंगवाते हैं ऑलमेड लेबॉर्ट्री, कोई एक कंपनी है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी से। उनका ये कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि 2000 इंजेक्शन इस वक्त कराची एयरपोर्ट पे कस्टम्स की तहवील में हैं, क्योंकि मकामी बैंक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर्म यानी EIF उसको वेरीफाई नहीं कर रहे। हालांकि स्टेट बैंक की शायद स्टैंडिंग हिदायत हैं कि जो जान बचाने वाली अद्वियात या आलात हैं उनकी LCs खोली जाए और उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर किया जाए। The shortage in supply increases demand, leading to price hike in almost every item that we import. Even chicken meat prices increased recently because LC for raw material used in chicken feed was delayed. And that's how policy decisions affect a common man's life. For more such videos, like and subscribe to DawnNews English.